हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं न्यूज़ इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, जैसा हम हमेशा देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ फोर्थ जनरेशन Zen 4 satellites are now commercially available as announced by ICEYE, that is ICEYE, the global leader in synthetic aperture radar satellite operations। तो ये जो सैटेलाइट है कितना इमेजेस पर डे कैप्चर कर सकती हैं? दी सैटेलाइट्स कैन कैप्चर 500 इमेजेस पर डे बेसिकली, एंड with a up to half concentrated within 2000 kilometer wide range per orbit they can capture. If we talk about ICEI, global leader जो हैं synthetic aperture radar satellite operations में, they have announced commercial availability of 4th generation Zen 4 satellites, जो latest generation है, it delivers the world highest fidelity commercial SAR images of up to 16 centimeter resolution, extends the high resolution field of a regard to 400 kilometer and enables more images per orbit pass for faster coverage of priority areas of interest, whatever it is. With the significant increase in coverage, optimized design जो Zen 4 है, it has built for large scale deployment and operation in large constellations. First wave of Zen 4 satellite was launched as a part of SpaceX TR-13 mission in March 2025, right? And imaging downlink जो है, it can occur simultaneously at up to 700 Mbps, enabling tasking acquisition and delivering with the same pass for near real-time monitoring. If anybody haven't till now downloaded the app, तो प्लीज़ प्ले स्टोर पे जाओ और ऐप को डाउनलोड कर लो, अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है तो। आगे देखते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द डबलिंग ऑफ भागलपुर दुमका रामपुरहट railway line covering 5 districts across Bihar, Jharkhand, West Bengal. By how many kilometer with this project expand the existing railway line network? तो 177 किलोमीटर तक बढ़ा देगा जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है रेलवे लाइन का, उससे 177 किलोमीटर और बढ़ जाएगा। और अभी अप्रूव किया है CCEA ने, एंड दिस विल कवर अ कॉस्ट ऑफ 3169 करोड़। एंड जो प्रोजेक्ट है, दे आर प्लान्ड ऑन घटी शक्ति, PM घटी शक्ति नेशनल मास्टर प्लान विद द फोकस ऑन एनहांसिंग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक एफिशिएंसी. Multi-tracking project will connect around 441 villages, about 28.7 lakh of people, and 3 aspirational districts such as Banka, Goda and Dunka. It will provide rail connectivity to prominent destinations such as Deoghar, Tarapeeth, that attract the pilgrims, also tourists across the country, and the capacity upgradation will enable additional free traffic of magnitude 15 million tons per annum. Coming to next, the construction of 4-lane greenfield Mukama Mungar section of Buxar Bhagalpur high speed corridor in Bihar will provide regional connectivity to several cities. And as the following reasons will which of the following regions will not be connected by this corridor? तो सब हैं, बेगूसराय नहीं है, ठीक है। इसको एक बार देखते हैं। यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ 4-lane ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल मोकामा मुंगर सेक्शन ऑफ बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर in Bihar, and this lane is based on hybrid annuity mode with a total project length of 82.4 kilometers and a total capacity of 447.38 crore, and this section will be connect important regions जैसे मुकामा, बराहिया, लखीसराय, जमलपुर,
or Mungar, and this corridor supporting average vehicular speed of 80 km per hour with a design speed of 100 km per hour, and this will reduce the overall travel time by on an average 1.5 hours. It will generate about 15 lakh man days of direct employment and 18 lakhs around man days of indirect employment. Coming to next, small satellite launch vehicle is a 3-stage launch vehicle designed to launch satellite weighing up to 500 kg into the lower earth orbit as we know. अब क्वेश्चन क्या है कि ये डेवलप किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई, इसरो के द्वारा, ठीक है. इट वाज डेवलप्ड बाय इसरो. अब हुआ क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑल इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL एंड इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट. दे हैव साइंड द स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट इन बेंगलुरु. एंड SSLV की बात करें, 3-स्टेज लॉन्च व्हीकल है, इसरो के द्वारा डेवलप किया गया. इट इज़ डिजाइन एज अ क्विक टर्न अराउंड ऑन डिमांड लॉन्च व्हीकल दैट कैन बी efficiently scaled for industrial production to launch satellites weighing up to 500 kg into the lower orbit. Under this contract, all will absorb the technology in the first 2 years followed by the 10-year production phase. और जो deal है, it marked 100 technology transfer facility by InSpace. Coming to next, to strengthen India's cooperative-led agriculture export, National Cooperative Export Limited has joined hands with which organization? So they have joined hand with Agriculture and Process Food Products Export Development Authority अपादा के साथ इन्होंने बेसिकली NCEL ने MOU साइन किया है. एंड दे हैव साइंड MOU एम एट एलिवेटिंग इंडियाज कोऑपरेटिव लेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट. If we talk about the focus areas, it includes capacity building, export quality compliance, infrastructure support, participation in trade fairs, global branding, market intelligence, and commodity specific export strategies. Empowerment will both will provide technical guidance and policy support to enhance the export performance, access new market, achieve the premium product value. And if we talk about the training program, it will enable cooperative society to gain expertise in the global quality standard, food safety, export document and all. Combining the vision, the market access of both infrastructure strengths with the NCEL wide cooperative network to generate economic benefit for the farmer member. Coming to next, which two companies recently partnered with Ministry of Road Transport and Highways to promote Sadak Suraksha Abhiyan, a national-wide road safety campaign in India. ठीक है, अभी Zomato और Uber ने ज्वाइन किया है. तो basically Ministry of Road Transport and Highway has collaborated with Zomato and Uber both to drive awareness and public engagement around the road safety. ठीक है, अगर रोड सेफ्टी सड़क सुरक्षा अभियान की बात करें, 2025 में जो कैंपेन जो है, इट हैज़ द थीम परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे, एंड इट वाज लॉन्च इन 2023 एंड इट एम्स फॉर बेसिकली हैविंग लेस रोड एक्सीडेंट बाय 2030. इफ वी टॉक अबाउट जो अनाउंसमेंट है, इट वाज मेड बाय नितिन गडकरी जी, एंड एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जोमेटो और उबर के द्वारा, एंड बोथ द कंपनीज विल शेयर रोड सेफ्टी टिप्स. एंड इन्होंने अमिताभ बच्चन जी को भी लिया है फॉर द पब्लिक अपील. बेसिकली जोमेटो विल डिलीवर सेफ्टी प्रॉम्प्ट वायर्स डिलीवरी ऐप एंड कंज्यूमर फेसिंग फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, और उबर जो है वो रोड सेफ्टी प्लेज इशू कर रही है फॉर ड्राइवर्स एंड इन्वेस्टिंग इन ड्राइवर एजुकेशन प्रोग्राम फोकस ऑन ट्रैफिक रूल्स and the responsibility on road behavior. Coming to next, India's largest green ammonia project developed by ACME Group in partnership with Japan's IHI Corporation is planned to be commissioned by which year? It is basically planned to be commissioned by 2930,
And if we talk about India's ACME group and Japan's IHI Corporation, they have joined hands to develop the country's largest green ammonia project at Gopalpur, Odisha. जो facility है, it is basically planned to produce approximately 0.4 million tons of green ammonia annually, ठीक है, upon completion. And IHI Corporation has acquired 30% stake in ACME Clean Energy, while ACME group retains remaining the 70% share, and the project it is targeted for commissioning by 2930, and it is expected to reduce 0.8 million ton of carbon dioxide emission annually. And this collaboration aligns with India's national green hydrogen mission also, and Japan's long term decarbonization strategy. Coming to next, which two organization has signed MOU to strengthen collaboration on key global policy matters in September 2025? Fine. It is OECD and ORF, Observer Research Foundation, and Organization for Economic Cooperative and Development. Both has signed MOU to strengthen the collaboration and dialogue on key global policy matters, and this partnership is tailored to facilitate the exchange of knowledge, expertise, and bring the India's policy perspective and experience more direct into the OECD discussion. The 5-year partnership will focus on key areas जैसे economic diplomacy, trade and investment, climate sustainability, digital transformation, critical sectors जैसे infrastructure, supply chain and all. ठीक है. If we talk about ORF, it is the leading Indian think tank with a global outreach, और इसका ऑफिस जो है वो वॉशिंगटन DC और दुबई में है. Coming to next, in September 2025, India signed MOU to boost bilateral trade with which country? India signed MOU to boost bilateral trade with Mexico in September 2025. ठीक है. It was announced by the announcement was basically made by Francisco Cervantes Diaz, जो प्रेसिडेंट हैं ऑफ द बिजनेस कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ मेक्सिको, एंड इन द साइडलाइन जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI leads leadership excellence, adaptability, diversity, sustainability was in collaboration with it, and it held in New Delhi. ठीक है. जो एग्रीमेंट है it aims to leverage the complementaries between the two economics and explore opportunity in areas जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, आपका एरोस्पेस हो गया, एग्रीकल्चर, मेडिकल डिवाइसेस एंड ऑल. It is basically expected to invest around $1,200 million to boost trade between the two countries. Okay, that was it from today's session. I hope you guys might have liked the session. पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. Thank you so much.